So we have this question 1325 of LEETCODE. What we need to do is we need to delete the leaves with a given value. We will be provided with a target integer obviously, and we need to delete all the leaf nodes with target value. But the twist is after you delete a node, if the parent node becomes a leaf node with target value, then you need to remove that also. Note that once you delete a leaf node with value target, if the parent node becomes a leaf node and has the value target, it should be also be deleted, and you need to continue doing that until you cannot. I'll be explaining you through the examples of lead code only. Here we have this whole tree, and whenever we'll traverse, so we'll find this leaf, and this leaf have a value of target value. Our target value here is our target value is 2. So this contains target value 2. So we'll remove that. We'll remove this. But after removing this, we'll see that this parent node became a leaf node again with that same target value. So we need to remove this also. And of course, this will be also removed because this is a leaf node with target value. So eventually our final tree will look something like this. Again, in this example, uh, this is leaf node. Obviously, this will be removed because it matches target value. I'll just write here. Uh, we have this target value. We have this target value equals to 3. And here we have t is equals to 2. So target value 3, this will be removed. Uh, this node will be removed. Obviously, this node will also be removed. So if we'll just remove these nodes, so our tree will look something like this: 3, 2, and this. That's it. So the main thing is we won't be removing this tree because this is not a leaf node. No, this is not a leaf node. We just remove the left subtree or left node of this basically parent node, but the right node is a leaf node, but it does not contain any target value. It is not 3. If and only if this would have been 3, we would have removed this, and then this will again be a leaf node. So we would have removed this also. That's how it should work. Again, this question 1 2 2 2, and here also target value is 2. So we'll remove this. We'll check if it leaf. Yeah, if it is leaf and the value is 2, the value is 2. We'll remove this. We'll remove this. So we'll be left with 1 only. So this was the whole logic behind the question, and we'll be moving on to the solution. But before that, you should be knowing another concept. You should be knowing another concept, and which is remove leaf nodes. Remove leaf nodes. So there's another question, which is a prerequisite kind of this, because what it's a how should I say? It's a another version of that question. In that question, what we just need to remove all the leaf nodes, whatever leaf node we have 2, 2, 4. We just need to remove them, not their parents. For example, if I'll explain, uh, if I had a tree something like this, okay, if I have a binary tree something like this, and they ask us to remove all the leaf nodes, so these will be removed. These will be removed, but we won't be touching them. We won't be touching them. We just need to remove the leaf node. So the concept behind that I'll be explaining right now, and then we'll move on to this one, delete given values, because it's just a little bit of changes, and we can get to this question. So we have this finally our tree, and I'll be explaining you very quickly the concept behind remove leaves. So what we are provided with a node, and this is that node, and here's the code, and I'll tell how we'll traverse. First, we'll check if the provided node is empty or not. If it's empty, we'll just return null. Okay, then this is the main condition, and this is just traversing. We are returning node again. I'll explain everything. So we are here, and this whole condition, I would like to talk about this condition for a moment. This whole condition, what this condition says basically, if node left signifies that if you are standing on this left of this node, left node of this, okay, left node of this is left node of this is null if left node is null. I'll just write this is English. If left node is null, if left node of your current standing node is null, and if right node if right node is also null, is also null. Okay, that's it. These two lines just signifies these things. And okay, after that we'll be entering into the if loop. If this is the condition, if after that, what this signifies is that if you're standing on a node and your left contains null, your right contains null, that means you're standing on a leaf. Understand this. If you're standing on one, and you'll check your left contains 2 currently. If you'll check your right contains 3. So it is not null, which signifies that this is not a leaf node. If we'll check for 2, again for 2 also, the left contains 4 and right contains 5. So again, not a leaf node. Then we'll be jumping onto the 4. For 4, when you check for the left, what does left contain? Of course, it contains null. Similarly for right also contain null. So that means that this is a leaf node,
And if it's a leaf node, what we are expected to return, we just need to remove it. And how do you remove that? While returning, just focus on this. This is a node type of function. This is a function of remove leaves node type of function, which means that it will return node. For example, I'm traversing through my tree, and every element, on every backtracking recursion, it will return a node to me. Okay, so if I'll just pass through 4, it will check left and right, it's null. And instead of returning itself, it will just delete itself. It will return null from here. So just imagine this. I'm standing on 2, and I've sent some guy on 4. 4 is a city, for example, and I've sent some guy, and I've asked him that what's the location, or what's the status of 4. So instead of telling me that 4 is present there, it will this guy will tell me that there is nothing present and it's null basically. So I'll just cut off any relation from 4, and my 2 will be alone. For example, I'll just remove this 4. I'll remove this 4. Now my tree looks like this. After this statement executes, my tree look like this. Okay, so this return null means that you just simply cut off the elements. You just simply cut off the node. Again, I'll traverse. This is basic recursion. I won't deep dive into it. So this is basic recursion, traveling to left and traveling to right, passing the left node, passing the right node. So I've traveled on my left, it has passed me null. Now I'll travel to my right, and this will again show me that it has null value. Why this will show me null? Because once you'll check left of 5, it will show null. Once you'll check right of 5, it will again show null. This means this is a leaf node, and if it's a leaf node, what we need to do, we just need to cut it off. So we'll just cut it off in here, and again this 5 will be removed. That's it how the problem will traverse. And again 6 will be removed in the same fashion, and 7 will be removed in the same fashion. So we'll be left with 1 and 2 only. In this question, we need to remember one thing, that we were not asked to remove all the leaf nodes after removing leaf node. Understand this. In our current question, we are clearly told that if you remove a node and its parent node become a leaf node again, then you should be also deleting that, and you need to continue that. You need to continue doing that until you cannot, like until it is either not a leaf node or the target value is not there. So the base is this. Base of this question is also this code, this whole code. And now I'll explain this, how this is a variation of the previous question. So for an instance, let's assume that we have this question from the starting. Okay, and I'll be switching to Hindi so that I'll be able to explain it more clearly and language barrier now. सो द थिंग इज, जब हम यहाँ पे आते हैं, सेम प्रीवियस वाला कोड है जिसमें हमें लीफ नोट रिमूव करनी थी। जस्ट हमें एक टारगेट और दे दिया गया कि उसको भी चेक करते रहो एंड वापस आते हुए भी चेक करते रहो। अगर हम उसको लीफ वाले नोड को ध्यान से देखें तो उसमें हमें सिर्फ ये करना था, नीचे जा रहे हो तो जैसे ही नीचे लीफ मिले उसको हटा देना और वापस आ जाना, सॉर्टेड। बट इस बार जो थोड़ा सा चेंज है वो ये है कि जब वापस आओ तो इसको भी चेक करना कि कहीं ये भी लीफ नोड तो नहीं बन गया। तो मैं इसको बोलूंगा कि कहीं ये भी करप्ट तो नहीं हो गया, मैं इसको ऐसे रेफर करूंगा, ये भी करप्ट तो नहीं हो गया। ये चेक करना कि कहीं ये करप्ट तो नहीं हो गया। अगर हो गया तो इसको भी डिटैच कर दो, एंड फिर इससे भी जब वापस आओ तो इसको भी चेक करना कहीं ये भी करप्ट तो नहीं हो गया। सो दैट्स हाउ दिस विल वर्क। अब लास्ट वाले से इसमें सिर्फ एक कंडीशन डिफरेंट है, सिर्फ एक कंडीशन, जो कि है ये वाली कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता दी थी। दिस वन इज फॉर रिमूविंग लेफ्ट, चेकिंग लेफ्ट बेसिकली। जहाँ पे भी ये चीज आती है ना, जहाँ पे भी ये आए, जस्ट रिमेंबर दिस, ये लीफ नोड चेक करने के लिए सॉर्टेड सा सीन है। लीफ नोड चेक करने के लिए, उसके बाद ये टारगेट वैल्यू चेक करने के लिए कि लीफ नोड तो मिल गई, एंड लगाए हुए मैंने, तो लीफ नोड तो मिल गई, क्या ये टिक है? हाँ ये टिक है, ये ठीक है, मतलब मिल गई लीफ नोड। क्या उस लीफ नोड पे जो वैल्यू मेरे को चाहिए वो भी वही वैल्यू पड़ी हुई है? मतलब मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए जैसे इस क्वेश्चन में, तो क्या यहाँ पे वैल्यू पे 2 ट्रू पड़ा हुआ? अगर है तो उस लीफ को हटा दो, जस्ट उसकी जगह नल डाल दो, रिटर्न नल कर दो, वहां से उसको हटा दो। बट जब वापस आ रहे हो, ये ट्रैवर्सिंग है, बेसिक ट्रैवर्सिंग है, ये भी बता देता हूँ कैसे होती है। अगर अभी हम 1 पे हैं, ठीक है, हम आए, जस्ट एक सेकंड इसको सारे को रिमूव करूँ। हाँ, हम 1 पे हैं अभी, ठीक है। हमने कॉल किया, हम इसके अंदर आए, हमने कॉल किया, एंड हमने चेक किया कि क्या ये नल है, नल नहीं है। उसके बाद हमने ये कंडीशन चेक करी, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो हम लेफ्ट पे चले गए। अब यहाँ से रिकर्जन स्टार्ट हो जाता है। अब रिकर्जन ने हमें फिर से इसी पे भेज दिया वापस से, बट वैल्यू चेंज हो गई। जो वैल्यू थी अब हम आ गए 2 पे, क्योंकि हमने वहाँ लेफ्ट की कॉल लगा रखी थी। सो अब ये फिर से मैं फिर से रिमूव करूंगा ताकि काफी क्लियरली एक्सप्लेन हो जाए। अब मैं फिर से आया हूँ, बट इस बार मैं रूट की वैल्यू 2 लेके आया हूँ, और टारगेट वैल्यू तो वो 2 है ही हमेशा। तो मैंने फिर से चेक किया है कि क्या मैं जिस 2 पे अभी खड़ा हुआ हूँ, क्या वो लीफ है? मतलब इसमें लीफ लग रहा होगा, मैंने बना रखा है, बट इसके अंदर इस पूरे डायग्राम के अंदर देखो, ठीक है, ये लीफ नहीं है अभी। तो मेरा ये मतलब एम्प्टी तो है ही नहीं, और वो लीफ भी नहीं है, तो मेरा ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, दोनों कंडीशन फॉल्स है। मैं फिर से लेफ्ट के अंदर आ गया हूँ, मैं फिर से लेफ्ट के अंदर आ गया हूँ,
एंड अब मैं फिर से रिकर्जन को कॉल करके मैं फिर से इसके अंदर जाऊंगा और जो टू का लेफ्ट है मैं उस वैल्यू को भेजूंगा। टू का लेफ्ट क्या था, फिर से टू था, तो फिर से मेरी यही वैल्यूज आएंगी। अब ये चेक करेगा कि क्या वो एम्प्टी है, एम्प्टी तो नहीं है, बट ये वाली कंडीशन, ये वाली जो सेकंड कंडीशन है, जो सेकंड कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी। ट्रू कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये लीफ नोड तो है, ये जो है ये लीफ नोड तो है, और इस पे इसकी जो वैल्यू है वो भी मेरे टारगेट की इक्वल है, टारगेट की इक्वल है मेरी वैल्यू, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गई, लेट मी चेंज द कलर, जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है, दिस वन, तो ये नल रिटर्न कर देगा। बेसिकली नल रिटर्न कर देगा मतलब इसको कट कर देगा यहाँ से। तो अभी हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि इसने यहाँ से इसको कट कर दिया, अब इसके नीचे चलेगा ही नहीं। ये सिर्फ मैं अभी इसके लिए बात कर रहा हूँ कि अभी हम लास्ट पे थे, अभी इसके नीचे जाने का इसको कोई फायदा ही नहीं है, इन कोड को चेक ही नहीं करेगा, इसने यहाँ से नल रिटर्न कर दिया। अब बैक ट्रैकिंग काम कैसे करती है, ये जो कॉल लगाई थी हमने, ये वाली जो कॉल लगाई थी, ये टू वाली प्रीवियस टू से कॉल लगी थी, इस वाले टू से कॉल लगी थी, तो वापस से हम इस वाले टू पे आए हैं एंड हमने अभी सिर्फ लेफ्ट ट्रैवर्स किया है। ये चीज रिकर्जन अगर अच्छे से आता होगा तो यू मस्ट बी नोइंग दिस, कि अभी हमने लेफ्ट ट्रैवर्स किया, लेफ्ट से हमें नल आया है, उस रूट के लेफ्ट में नल आया अभी हमें, ठीक है। अब हम राइट पे जा रहे हैं, अब हम राइट पे चेक कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि रूट के लेफ्ट की वैल्यू जो है वो नल हो गई है अभी, ओके, अभी वो नल हो गई। अब हम राइट की कॉल लगाएंगे इसी टू से, इसी टू से फिर से राइट की कॉल लगाएंगे एंड इस टू से इसको लेफ्ट से तो नल मिल गया। अब हम राइट की कॉल लगाएंगे रूट राइट, तो ये फिर से इस लीफ नोड में जाएगा। अभी क्या लेके जाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके राइट में कुछ है ही नहीं, इस वाले टू के राइट में एम्प्टी है, तो ये यहीं से वापस रिटर्न कर जाएगा। वो चेक करेगा कि अरे तुम तो एम्प्टी हो, तो ये यहीं से नल रिटर्न कर देगा, पूरा कोड नहीं चेक होगा। तो ये यहाँ से भी नल रिटर्न हो गया, इसका मतलब कि इसके राइट से भी नल मिल गया उसको, अच्छे इसके राइट से भी नल मिल गया। तो हमारे पास फिर से क्या हो गया कि रूट के राइट से भी नल है, रूट के राइट में भी नल है, इतना सॉर्टेड, ठीक है। अभी हम वापस इस टू पे आ चुके हैं, हमने लेफ्ट चला लिया, राइट चला लिया, अब हम ये भी चला चुके हैं, ये भी चला चुके हैं, ये भी चल चुका है, ये भी चल चुका है। मैं इस वाले टू के लिए बात कर रहा हूँ, अभी वन के लिए अभी हम यहीं पे हैं। ये चीज गौर करने वाली है कि अभी हम वन के लिए इसी रूट लेफ्ट पे ही हैं, अभी लेफ्ट में ही ट्रैवर्स हो रहा है। तो हमने इस वाले टू पे वापस आ जाते हैं, तो हमने ये चेक कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब हमने फिर से कंडीशन लगाई है कि क्या रूट का लेफ्ट नल है, क्या रूट का लेफ्ट नल है, हाँ यार नल है। क्या रूट का राइट भी नल है, रूट का राइट, हाँ वो भी नल है। अच्छा, क्या रूट की वैल्यू टारगेट की इक्वल है, टारगेट क्या था हमारा, टारगेट टू था, क्या हमारी अभी जो वैल्यू है वो टू की इक्वल है, हाँ यार वो तो टू की इक्वल है, विच मीन ये तो हमारा करेक्ट हो गया ना, हमारा कल्प्रिट है, तो हमें यहाँ से कट ऑफ कर देना, बेसिक सिंपल सा, सिंपल सी बात है कि इसको यहाँ से कट ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये लीफ भी है, ऐसे टारगेट की इक्वल भी है, सारी चीजें हैं इसमें। तो हमने इसको कट ऑफ कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ हम रिटर्न रूट, हमने हमारे वन ने बेसिकली लेफ्ट में कॉल लगाई थी कि मेरे को सब कुछ नीचे से चेक करके आओ और ये बताओ कि कहीं पे कोई लीफ नोड ऐसा तो नहीं है जिसकी वैल्यू टारगेट की इक्वल हो। तो जब हम नीचे से आए तो हम नीचे से कुछ ला ही नहीं पाए, मतलब नीचे से सारा कट ऑफ होता चला गया एंड वी वर लेफ्ट विद ओनली वन, तो हम वन के साथ बचे। अब ये वन के लेफ्ट तक की कॉल थी सिर्फ, ये वन के लेफ्ट तक की कॉल थी। अब हम वन के राइट पे, अब हम नेक्स्ट कॉल पे आए, हमने वन के राइट में कॉल करी। सिमिलरली राइट में भी चलेगा, थ्री पे जाएगा, थ्री के बाद टू पे आएगा, टू को चेक करेगा, टू को कट ऑफ कर देगा, उसके बाद वापस थ्री पे आएगा, फिर थ्री से राइट में जाएगा। मैं यहाँ पे जल्दी से डिपिक्ट कर देता हूँ, ये यहाँ से नल रिटर्न करेगा बट राइट से फोर ही रिटर्न करेगा, तो ये तो लीफ नोड हुई नहीं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसका फाइनल ट्री वन थ्री एंड फोर ऐसा बन के आ जाएगा हमारे पास। यही हम एग्जाम्पल में भी गिवन है यहाँ पे, वन थ्री एंड फोर, ये तो बहुत सिंपल केस था। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इस वाले में, होगी ये वन थ्री टू वाले में, नहीं प्रॉब्लम नहीं, मतलब हाई सी से सारा कोड चल जाएगा। इसमें भी सेम चीज है, इसमें हम ये वाला लेफ्ट तो हटा देंगे बट ये वाला राइट हमें हटाना ही नहीं पड़ेगा, तो ये वाला राइट नहीं हटाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू टारगेट के इक्वल है, मतलब हमें थ्री टारगेट चाहिए था, ये है टारगेट, बट हम इसको लीफ नोड नहीं बोल सकते क्योंकि इसका ऑलरेडी एक चाइल्ड है, तो हम इसको नहीं हटाएंगे, तो हमारा जो आंसर है वो वन थ्री टू होगा, क्योंकि ये वाला तो हटेगा, ये तो वो है ऑब्वियसली, क्या नाम है, लीफ नोड है ये तो। एंड दिस इज अगेन द सेम थिंग, वन टू टू टू, इसमें हमारा टारगेट वैल्यू टू है, तो ये सारे टू हटते चले जाएंगे, वन बचेगा लाइन से। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप ये समझ आ गया।